Okay, hello everyone. Good morning and welcome to another edition of the Hindu Analysis. Yes, I hope like you can see me properly and you can hear me properly. Okay, so I think I'm properly audible and visible. Great. So today we are having another edition and कल भी कुछ मेजर न्यूज़ मेजर चीजें हैं हेलो रेश पढ़ना बच्चे कुछ जो मेजर इवेंट्स हुए उसमें काफी कुछ था लाइक प्रधानमंत्री जी केरला में थे he had some rally relevant to election वहां पे कुछ बातें हुई हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है he was in some place he was talking about some inspiration like taking inspiration from the uh, Netaji Subhash Chandra Bose then there was something going on in Israel then Russians were like कि हमें क्या चाहिए हम वो बता देंगे hello Daksh right? And Ukrainians were like, कि we need ceasefire. Like एक अच्छी चीज ही निकल के आई है कि मतलब अच्छी चीज in the sense कि this is a hypocrisy of Western world कि they don't work on peace, they want to work on ceasefire. Yes, ceasefire is temporarily peace. Peace is a permanent ceasefire. So they are still talking, like they want to mediate the talks between Ukraine and Russia, but they want to mediate the talks with the that particular concern कि हमारे पास ceasefire. On the other half, we need permanent like solution for this, and permanent solution is a permanent peace. So इस तरीके से जो चीजें निकल के आई हैं, वो एक eventful हो रहा है. Then there is this video of one of the AIMIM uh, uh, like a leader who won the BMC election जो काफी वायरल था कहीं से आ रहा है या ना and there was some other thing so people had this debate is it a B party that is working on B team that is working on तो कई ऐसी पर्टिकुलर चीजें नहीं है जो yesterday उसमें वो काफी ज्यादा न्यूज में रही हैं and I know you guys I hope you guys don't belong to social media तो मैं कुछ कुछ चीजें तुम्हें ऐसे बताते रहूंगा जिससे तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी रहे कि क्या चल रहा है देश दुनिया में है ना so let's start with the most important news Daksh actually the way Russia is demanding and the way things are going like in both the cases चीजें थोड़ा सा अलग है like अगर मैं यूक्रेन को देखूं and रशिया को देखूं तो they are supposed to talk about the peace but the Western influence from like America and Western Europe, they are not letting it happen. And Russia, on the other half, it is very much ready for it with its aggression. तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक ही था तो अभी बहुत लंबा टाइम है चिल करो हाँ देयर इज दिस वीडियो दैट वेंट वायरल जैसे मैक्रोन जेलेंस्की ये लोग जो हैं वो पुतिन से बात करना चाहते हैं and they are talking about peace. So one of the generals says, ceasefire, and one of the general was like, we are ready for peace, but not for the ceasefire. And peace terms negotiation जो है वो अलग होंगे. तो वो एक अलग कहानी है and hypocrisy चल रही है फिलहाल के नाइट टाइम पे. Let's have the most important news segment first. So same debate वो जो governors walkout है from the ceremonial speech for every session, right? So जिसको आप what we can say gubernatorial walkouts या constitutional limits की बात जो हुई है गवर्नर की वो फिर से डिबेट में रहा है because recently तमिलनाडु कर्नाटका केरला you see the pattern these are the states ruled by the opposition parties तो वहां पे ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आई है जो आर्टिकल 176 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है which is addressing the governor's address उससे बहुत सारी डिबेट शुरू हो चुकी है the Supreme Court also is having some proceeding like had some proceeding relevant to this जिसमें उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट गवर्नर एड act on aids and advices right of the state government so they should do as advised from the state government
हाँ, उनका स्व-विवेक यानी जो पर्टिकुलर सेल्फ इंटेलिजेंस है उससे उनको डिसीजन मेकिंग करने के लिए होता है। बट इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग अगेंस्ट their self particular intelligence, then they have to push according to that, right? So जो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का केस इसमें वापस डिस्कस किया जा रहा है। गवर्नर इज अ काइंड ऑफ तमिलनाडु गवर्नर केस था, in which the court says कि no, you cannot ignore or neglect the elected government's what we can say rule decisions। तो वो एक पर्टिकुलर चीज थी एंड गवर्नर का जो पर्टिकुलर रोल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उस पर वापस डिबेट चालू हो गई है एंड इट्स वेरी क्रिटिकल जिस तरीके से चल रहा है। सेकंड बिग न्यूज वाज अनिल अंबानी केस। यस, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली seeks status report on Anil Ambani bank fraud case जो yes बैंक के साथ हुआ था, सीबीआई ईडी के अंडर चल रहा है। So not only SBI, that is, sorry, Yes Bank, SBI, and some other particular fund which was moved from one place to another place. जिसको money laundering कह सकते हो तुम। Then the third news that was in third thing that was in news was एल्गार परिषद केस। इस पे एक अच्छा डिस्कशन करेंगे। So for now इस थोड़ा सा होल्ड रखते हैं। This is something to be discussed। आज आज ही डिस्कस करेंगे, कल नहीं करेंगे। And finally, like India EU जो ट्रेड एग्रीमेंट है अगेन दुनिया भर में टॉक्स इसकी चल रही थी। आई हैव सीन ट्विटर लाइक people from the European Union, people from the Western world, even Middle East were talking about it कि ये किस तरीके से सक्सेसफुल होगा एंड हाउ एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 years of negotiation है। Talks are still going on, like 16th edition था वो finally doing it, but January 27 तक आते आते जो इंडिया ईयू समिट है that will be finalized। फिर रशिया यूक्रेन वॉर एज दक्ष सजेस्टेड, राइट, वो जो लड़ाई है ना, इसकी बात कर रहे हैं अपन, डॉनबस की बात कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में जो डॉनबस डिमांड है कि यूक्रेन शुड वैकेट डॉनबस फॉर अस एंड देन वो आगे बढ़ेंगे। तो वो जो रशिया यूक्रेन यूएसए टॉक्स इन यूएई उसका वापस डिस्कशन शुरू हुआ। देन यूएस ईरान टेंशन। सो यार ये आदमी मान नहीं रहा है, मतलब एक दिन पहले ही आई फेल्ट सम रिलीफ दैट दिस गाय इज नॉट गोइंग टू टेक एनी मिलिट्री एक्शन, एनी फोर्सफुल एक्शन ऑन ग्रीनलैंड। और आज ही कह रहा है कि भाई साहब यूएस आर्माडा इज हेडिंग टुवर्ड द गल्फ रीजन। तो ये वापस आ गया है न्यूज में, मतलब ये भाई चैन से जीने का खाने नहीं देगा। यस 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 दक्ष, ये एक बड़ा डिसीजन होगा तो दुनिया भर के लोग तो बात करेंगे ही। सो यस, जैसे जैसे थोड़ा बहुत शांति मिलती है कि हाँ ठीक है यार वो चाचा ट्रम्प बैठ जाएंगे, बट मतलब वो शाम को आते आते कुछ तो ऐसा होता है कि भाई को अलग ही लेवल पे कहीं पहुंचा दिया जाता है। कुछ तो गलत चीज कंज्यूम कर रहा है ये आदमी। हाँ, और उसी कंजम्पशन के इन्फ्लुएंस में आके वो ऐसी बातें करता है। फिर दो और न्यूज हैं जो इस समय उसमें रही। एक है महुआ मोइत्रा का, यस, कैच फॉर क्वेश्चन, जो अभी रिसेंटली लोकपाल के अंडर है। और मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को 2 महीने का टाइम दिया। Just a minute। कि जो कैश फॉर क्वेरी केस है उसमें रिपोर्ट दीजिए। एंड एज यूजुअल कल बसंत पंचमी थी, तो भाई साहब भोजशाला केस तो वापस आना ही है। यस, इट इज 70 kilometers from my like where I'm residing। Dhar district is there, and there is a place, a beautiful place. I have been there like several times. So there is a temple of Saraswati, Mamata Saraswati, and there is a mosque as well in a same complex, and that shows the beauty of like Indian society की ऐसी चीजें होती हैं। Even in Indore there is a takery like in the Mahu Pithampur road। मेरा कॉलेज काफी पास था, वहां से हम टेकरी में जाते थे, तो वहां पे भी एक बजरंग बली का मंदिर था और एक मजार थी। So that shows the beauty of Indian society, but some political extremists take it to the other negative level, and they keep fighting on
दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई हमें उसी दिन जुमे की नमाज भी अदा करनी है, उसी दिन हमें पूजा भी करनी है, तो हम लड़ेंगे, लड़ने के बाद पूजा पाठ करेंगे। दो पूजा पाठ इज अ मोड ऑफ अचीविंग पीस, बट क्या कर सकते हैं? सो हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा कि व्हाट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। सो दीज आर द मेजर न्यूज जो uh, आज के उसमें रही हैं। सो मूविंग ऑन सम बेसिक हेडलाइंस। ममता बनर्जी एज यूजुअल इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। सेड 110 डाइड इन बंगाल ड्यूरिंग द एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एंड कल का मैच देख के तुम्हें काफी मजा आया होगा, क्यों? राइट। सूर्या भाऊ लाइक अलग ही लेवल पे जा रखे थे। एंड नॉर्दर्न रीजन में हैवी स्नोफॉल हुआ है तो ठंड बढ़ गई है। यस, इंदौर में भी ठंड बढ़ गई है। दैट वाज लाइक कम थी। फिर मणिपुर में जो किलिंग हुई थी, we yesterday we discussed about it, that a Meitei man was killed in the Kuki region. So that particular case of assassination murder case is given to NIA, says the Manipur government. And PM takes a double engine push to Tamil Nadu and Kerala. Right. Single family rule, benefit of central government scheme, politics is going on. We are not going to discuss much about it. Right. Uh, हाँ हाँ, क्या डाइट भाई? मतलब दक्ष क्या कहना चाह रहे हो? I mean, he was in Meitei, sorry, Kuki region. He was a Meitei man. I guess his wife was Kuki, and he was abducted and killed. Yep. तो मतलब assassination, murder और killed, he's dead. तो चलो सबसे पहले बात करते हैं क्या चल रहा है अनिल अंबानी केस में। सुप्रीम कोर्ट सीक स्टेटस रिपोर्ट ऑन द बैंक फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग अगेंस्ट द अनिल अंबानी केस। राइट। वो है पेटिशन, उनका सीधा कहा था 5 year अनएक्सप्लेन्ड डिले बाय द कंप्लेंट। राइट। द बैंक एंड अदर इनिशिएटिव्स like displayed by the institution like RBI and ED clearly indicate the deeper industrial complexity that the investigating agencies have entirely ignored. The problem is, oh, 110 men dead. Does she mean actually? Again, मैं इस पे डिटेल न्यूज भी है नेक्स्ट पेज में। I read that news, and she is allegedly accusing that because of previous SIR work, the PLO booth level officers and some other people actually lost their life due to this particular process. That in may let that also include those people who are migrating from one place to Bengal again to register themselves in the name of SIR. Again, political statement है। We got the report, some of BLOs committing suicides. We got the report about the difficulties they face, difficulties faced by people. So there can be some particular truth behind this, but we cannot confirm the exact number. हाँ, कुछ चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रही हैं। सो अनिल अंबानी के इसमें जो यस बैंक, एसबीआई एंड अदर पर्टिकुलर वो है बैंक से, उनके थ्रू जो पैसा वो किया गया और फिर मूव किया गया, तो दैट इज समथिंग जो जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी हुई है। एंड दिस पर्टिकुलर गाय है ना, ये फोटो बढ़िया आई है, क्यों? थोड़ा सा इसके दांत लाल पीले कर देता हूँ। खैर, ओके। जोक्स अपार्ट, दिस गाय इज लाइक बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। सो अभी फॉर नाउ वी थॉट दैट ईरान इज हैविंग देयर ओन प्रॉब्लम टू सॉल्व, but he said there is an armada headed toward the Gulf region. And we had discussed the Iran problem, right? How it started and how it's going on. And we also discussed about the hypocrisy of US and West world, right? कि किस तरीके से इन्होंने ईरान को परेशान किया। For example, if you see why this sort of inflation, why the dollar and जो रियल है उनके बीच में
इतना लंबा चौड़ा वो रहा है, क्या कहना चाहिए, कि डिफरेंस आया, एकदम से करेंसी फ्री फॉल हुई। तो उसके पीछे एक मेजर रीजन जो है वो सैंक्शंस है। एंड सैंक्शंस किसने लगा रखे हैं? यूएसए ने एंड वेस्ट वर्ल्ड। एंड on the other half, if you want, like the way he speaks and the way Western world speaks, that we want, we are well wishers of Iranian people, we want Iranian public to grow. The first step you should do, dude, वो sanctions हटाओ जिससे उसका ट्रेड प्रॉपर हो जाए और वो अपने आप काम कर लेगा। बट नहीं, they are supposed to do it once again and they are again doing it. Let's hope for the best. I told you Iranian people are having two major enemies. One enemy यहाँ पे listed up है, yeah, right? Another enemy is a regime जो अभी currently rule कर रही है. They both are not at all helping common. So ऐसा नहीं होना चाहिए. You are protesting against the regime and you get into the influence of US and its ally. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि against the US you decided to stay with the regime. If you want to change the power and you want to bring the democracy, a proper democracy that is supposed to be functioning, that should be by you, right? Your people, your influence, not USA, not others, right? There was article how he wanted to buy Greenland. हाँ, बहुत सारी चीजें तक कमेंट करते हैं। ओके, सो यस, अभी तो ये कह रहा है कि देयर इज एन आर्माडा हेडेड टुवर्ड द गल्फ, है ना? एंड आई चेक द ट्विटर, आई चेक इंटरनेशनल न्यूज और उनके जो भी एडिटर्स एंड बाकी सब होते हैं, वी डोंट हैव लाइक क्लियर कट कंफर्मेशन कि क्या है। दे आर ऑलरेडी हैविंग मिलिट्री प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट अमेरिकन, so they might be like bluffing it or something, but अभी तक ऐसा कोई confirmation नहीं आया था, मैंने जब सुबह सुबह ट्विटर उठा के देखा था तो। Okay, moving on to the next one. Again, a political statement from MK Stalin ki. Stalin takes a dig at Modi, say his Dabba engine government won't succeed in Tamil Nadu. So once Modi ji is saying double engine, another opposition parties are calling it Dabba engine. You're right. Now let's discuss this Elgar Parishad case. Anybody, any idea about the Bhima Koregaon case? Anyone? No one? No? Okay. Let's get into the history first. गढ़ परिषद की बात करते हैं तो 2017 में, है ना, द लोकेशन वाज पुणे, ठीक है। देयर इज दिस पर्टिकुलर स्टेम जिसका नाम था एल्गार परिषद कॉन्क्लेव, व्हिच वाज हेल्ड, आई गेस दैट वाज 31st ऑफ दिसंबर, मुझे याद है। अथॉरिटीज जो है allegedly they like this particular in this particular conclave, they provoked and they provided provocative speech that actually triggered the caste-based violence in the Bhima Koregaon. Yes, तो यहाँ के particular जो वो थे speeches थे, that triggered the violence, caste-based violence in the Bhima Koregaon the same day. And this was the allegation on the Elgar Parisar, right? जो investigative agencies है मैं उनकी बात कर देता हूँ। The investigating agencies, initially Pune Police and now NIA, claimed the event was backed by banned CPI, that is Communist Party of India, Maoist, as a part of a larger conspiracy for destabilizing the government. Some of the document they recovered, right? Yeah, मतलब हुआ क्या है मैं बताता हूँ. So, Bhima Koregaon had a history of a caste-based violence in 2017. Some of the activists, like for example, Sudha Bharadwaj, what we can say, Varavara Rao, Anand Tilumandam,
वेरन कॉन्क्लेव, अरुण फेरेरिया, सोमा सेन। सो कई ऐसे पर्टिकुलर नाम थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। एंड उसके बाद ये वायलेंस हुआ तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक्चुअली वेंट अगेंस्ट देम and they found certain proof according to the agencies that they were ready to destabilize the government. They also were planning to assassinate the prime minister Modi ji. Yes, the case is still on, है ना? ऐसा नहीं है कि केस खत्म हो गया, अभी केस still on, but the allegations were very strong. Yep. और वो थोड़ा सा like this particular case, Umar Khalid case and Bhima Koregaon and Algar Parishad case, they look same because it's a long period of time जब केस को प्रॉपर आगे बढ़ना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ देर आर कस्टोडियल डेथ फॉर एग्जांपल ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट जो फादर स्टैन स्वामी थे उनकी जुडिशियल कस्टडी में आई गेस जुलाई 21 में डेथ होगी while awaiting trial. तो या ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो टू केसेस जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वन ऑफ देम इज उमर खालिद शर्जीलगांव केस अनदर वन इज भीमा कोरेगांव केस व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम some of the particular figure got the bail Sudha Bharat was one of the activists right Veron Gonzalez Arun Ferreira Shoma Sen and some other one got the bail. Others didn't. And Father Stan Swami, जो कि tribal activist थे, he that was something जो कि problem मतलब गलत हुआ because he died in the judicial custody. He was not well. तो recently again वो particular case आया है. जो recent development है, let's talk about that recent development. So जो activist थे, सागर गोरखे and रमेश किशोर, जो जनवरी 26 के आसपास जब केस की हेयरिंग हुई अभी लेट क्लास से हेयरिंग हुई तो दे गेट द बेल on the grounds of parity and prolonged incarceration over 5 years. They must attend the National Investigation Agency office once a month. ये उनकी कंडीशन है. So 5 साल से कुछ नहीं हुआ तो दे have to grant the bail. Then जो सुरेंद्र गडलिंग थे इनको अभी भी कस्टडी में रखा गया है एंड अभी रिसेंटली लाइक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका केस पेंडिंग है महेश रावत ज्योति जगताप एंड लोना विलियम्स and सुधीर देवले they got the bail on the same reasons so हुआ ये है why this case is always in news because जिस तरीके के what we can say proof they actually got and they actually talk about, that proof looks suspicious because the laptop they actually recovered from these activists. They actually got this one particular document in which they were planning to kill PM. And none other like कुछ और ऐसा बड़ा वो नहीं निकल के आया था. On the basis of this, it was like after 2017 to now 2016. This is sorry 2026. That is almost 9 years. जब से ये पर्टिकुलर केस चल रहा है there are still people जिनको बेल नहीं मिली there are people who got granted bail there are people who died in custodial death and still the trial doesn't seems like moving on तो ये दो एक ऐसे केसेस बन चुके हैं अपने उसमें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो परेशानी का क्या कहना चाहिए डिस्कशन है राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इसको थोड़ा सा रिसर्च करना डिटेल में 9 hospitalized after falling ill due to the water contamination in MP. अगेन इंदौर जहां मैं रहता हूँ फिर से वही पर्टिकुलर चीज हुई है जो चंद्रमार्ग एरिया है वहां पे 9 लोग जो हैं वो पानी पीने के बाद बीमार हुए they got hospitalized. Though the municipal corporation of Indore is working hard for testing water and making it right, but still the work is not done and it's almost a month, right? So yes, that's terrible. I hate him, but I respect the designation. Daksh, don't get into the conclusion, right? Yes, there is a thing. जो आप being a lawyer आपको accept करनी चाहिए. There is a person who is accused, and then there is a person who is like guilty. Okay, so इस accused से guilty होने में या acquit होने में there is a long legal proceeding. एंड वो जो केसेस हैं जो लंबे चलते हैं दिस इज नॉट जस्ट लाइक वन थिंग वो केसेस के लंबे चलने के पीछे का रीजन भी ये है कि व्हेनेवर देयर इज अ केस इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी
The existing judicial system goes through a process of examination and test, that whether our system is capable enough to deal with such kind of cases. For example, 2017, sorry, 2012 जो निर्भया केस था, उसमें there is this one person जिसने सबसे ज्यादा brutality की थी, जो कि जुवेनिल था. So at that time, we didn't had that sort of legal system जो उस juvenile को एक adult की तरह treat कर सकता for that heinous inhuman crime. But after that case, we had changed our system, our guidelines, right? So every case is a challenge. This is again a challenge and exam for our existing judicial system. And until and unless they are not proven guilty, right? You should not hate them. You should not love them. They are accused, right? Follow the case. Don't get into the emotional aspect. ओके, मैं हमेशा से यही सजेशन देता हूँ कि बीइंग अ लॉयर, रिस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम. If you find some flaws, some loophole, you can work on it for the change. But ना ना ना, that's not something. अभी हुआ, अभी केस चल रहा है भाई. ठीक है. So that is how the things are. इंदौर में फिर से वही है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज डूइंग वर्क, गुड वर्क, बट स्टिल अभी पूरा नहीं हुआ है. Heavy rain, snow lashes North India. Chief Minister monitor the rescue and repair works. Yes, जब जब ऐसा होता है कि नॉर्थ इंडिया में खूब सारा भर भर के आपको रेन्स एंड स्नोफॉल मिलता है, तो आपको पता है कि हिमाचल, उत्तरांचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, राइट, एंड अदर पर्टिकुलर प्लेसेस दे फेस huge losses, and landslide and some other particular issues came into the existence again. And प्रॉब्लम है इसके कारण बहुत सारी पर्टिकुलर लोगों की जान जाती है, लोगों की कंस्ट्रक्टेड घर जो है वो टूट जाते हैं. So yes, the ministers are supposed to rescue and monitor the repair work, the rescue work, etc. तो वो स्टार्ट हो चुका है, राइट. Jurisdictional changes were not allowed in case of ahead of census. So यूनियन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया है कि any jurisdictional changes status till 31 March 2027 due to the forthcoming population census is not allowed. तो वो एक पर्टिकुलर कहानी चल रही है. Now let's discuss this. मुझे ये डिस्कस करने का बहुत मन था. आई होप तुमने थोड़ा बहुत फॉलो किया है, राइट, इस पर्टिकुलर चीज को. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द थिंग इज कि लास्ट पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट जो थी, उसमें देयर इज दिस पर्टिकुलर एक्विजिशन की जो टीएमसी की वो थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महुआ मोइत्रा, राइट. शी वाज accused of asking question in the parliament by taking cash. यस. सो थोड़ा सा केस का बैकग्राउंड बता देता है ना. मोहम्मद तृणमूल कांग्रेस एमपी is accused of accepting cash and gifts from businessmen, especially like Darshan Hiranandani, in exchange of asking question in the parliament that targeted the business like interest of the Adani group. And she also accused of sharing her parliamentary login credential with Hiranandani. Yes. So first thing first, उन्होंने जो questions पूछे, she is accused of asking those questions which is targeting their rival, that is Adani Group. And she also shared her login ID, जो particular credentials होते हैं, वो जो particular credentials है, they are very 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 what we can say private. You're not supposed to share these credentials with anyone. But उनके ऊपर accusation ये है कि she shared those credentials with the Hiranandani. And after this particular allegation was made, she was actually like expelled from the Lok Sabha. Yes, and in 2024 itself, uh, है ना? No, December 2023, if I'm not wrong. Yes, December 2023 by the Ethics Committee. And 2024 वापस election हुआ, she came back. जो legal challenges थे, महुआ मोइत्रा ने completely deny कर दिए थे allegation, calling the expulsion by the kangaroo court, hanging by the kangaroo court, and she challenged the decision in the Supreme Court. And cases going on. जो current system है, current जो particular part है, उसकी बात करें.
In December 2025, the Delhi High right, set aside a previous local order and had allowed CBI to fill a charge sheet. uh, लोकपाल को भी बोला कि भैया आपका जो भी पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन है, आपका जो भी पर्टिकुलर वो है, मतलब सैंक्शंस हैं अगेंस्ट दी महुआ मोइत्रा, वो आप 2 मंथ्स के अंदर क्या करें, कंप्लीट करें. दो महुआ मोइत्रा इज re-elected in the general election 2024, I guess कृष्णनगर, यस, कृष्णनगर से उन्होंने वापस इलेक्शन जीत लिया है, तो शी इज इन द लोकसभा अगेन इट्स, बट ये केस जो है काफी लंबा जाने वाला है. ठीक है, मूविंग ऑन. टॉप जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट किल इन एनकाउंटर इन कठुआ जम्मू कश्मीर. अनदर गुड न्यूज फॉर टुडे. वही भैया, न्यू रूरल जॉब्स एक्ट वर्सेस तीन अनमनरेगा, वो चल ही रहा, नरेगा वर्सेस वीवी जी राम जी, and that is going on and everybody is saying कि ये कंटिन्यू रहेगा कुछ सालों के लिए, because that is changing how the state and center are functioning. I mean, स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा लगने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लगने वाला है, सो इन केस देयर आर प्रोजेक्ट्स इन विच द कॉमन पीपल आर वर्किंग एंड सेंटर ने पैसा रिलीज नहीं किया ड्यू टू सम रीजन, तो स्टेट्स पे बर्डन बढ़ जाएगा. ममता says 110 dead due to SIR, blames election commission and central government, है ना वो, रह दो. Again, Anita Bose seeks support for return of Netaji Subhash Chandra Bose SS. Yes, Netaji Subhash Chandra Bose की जो बेटी हैं, Anita Bose, right? She on her 129th birth anniversary says कि जो उनके ashes हैं वो घर वापस आने चाहिए, इसके लिए आप हेल्प करें. उन्होंने एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दिया, एज नेताजीज डॉटर आई इनवाइट द इंडियंस फॉर टुडे हु स्टिल रेवर हिम एज सपोर्ट फॉर हिज अपोस्टमस रिटर्न फ्रॉम एक्साइल टू सपोर्ट द ट्रांसफर ऑफ हिज मॉर्टल रिमेन्स टू इंडिया फॉर अ फाइनल एंड फिटिंग डिस्पोजल. तो वो चल रहा था उनका डेथ जो था वो इंडिया से बाहर था. आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में उनका देहांत नहीं हुआ था. सो वो चाह रहे हैं कि टोक्यो से जो पर्टिकुलर जापान में उनकी डेथ हुई थी, तो टोक्यो में उनके एशेस रखे हुए हैं, तो टोक्यो से उनके एशेस जो है वो इंडिया में. एंड फिर जो हमारे सीटीएस हैं, उन्होंने भी नेताजी के विजन से लेसन लेने की जरूरत जो है उसके बारे में बात की, कि नेताजी जो है वो ना दक्ष, don't get into the conspiracies. You thought he was disappeared, he lived as Gumnami Baba, he lived some other particular life. He lived in Argentina, the way Hitler was also found in Argentina after the Second World War and some other thing. नहीं यार, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बात नहीं करेंगे अपन. अपन पढ़े लिखे लोग हैं, राइट, एंड वी वांट कि हम फैक्ट्स पे बात करें. तो फैक्ट है कि अभी तक हमारे पास जो बेसिक है वो ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया था जापान में, हम उनकी एशेस को करते हैं. सो स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ नेताजी हैज लेसन फॉर कंटेम्परेरी इंडिया. यस, पंडित सॉरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो विजन था मिलिट्री को लेके, जो कंटेम्परेरी इंडिया को लेके, जो अदर कंट्रीज को लेके था, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एग्रेसिव एंड वेरी टुवर्ड इंडिया. The way he established the Indian National Army, the way he led 144 45, लाइक जो भी आत्मनिर्भर था, सेल्फ रिलायंट, इन सारी चीजों की बात पहले ही कर चुके थे. यस, he built a government in Singapore and some other regions. So he had a great vision. It was a big loss that we lost him like after the war. But I hope like जल्द से जल्द उनके विजन को, उनकी टीचिंग्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए. Moving on to the next one. Rahul Gandhi demands PM to intervene to save the tariff hit textile sector. अगेन मतलब हमारे सरकार ही नहीं, मतलब हमारे मोदी जी नहीं, राहुल गांधी भी परेशान है, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, कि भाई मोदी जी कुछ करो. ये गधा जो है ना, ये मान नहीं रहा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्द से जल्द ये ट्रेड डील साइड हो. यस, दक्ष ही मेट हिटलर. There are tons of different things, tons of different documents, uh, tons of different people in WhatsApp also who are spreading some different news. जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो सबसे ऑथेंटिक चीजें मैंने देखी हैं अबाउट नेताजी,
जो उनके ही साथ वालों ने, उनके ही जो दोस्त थे, उनके पार्टनर वाले, उन सबके थ्रू जो लिखे गए डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, उनमें ये बात कही गई थी, यस, he met Hitler, but he just needed some strong military support so that जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश imperialistic पावर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, उनको हटाया जा सके एंड इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसको बनाया जा सके. एंड द रीजन बिहाइंड दिस वाज वन ऑफ द like जो reason one of the reason that came out was the communal tension that was growing day by day between Hindus and Muslim. तो वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा करके जाएं which they did actually. तो उसके पहले ही वो टेक ओवर करें, बाद में इंडियंस डिसाइड करें, बहुत सारी चीजें थी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज नॉट जस्ट अ सिंपल कैरेक्टर कि उन्हें आप व्हाट्सएप से या किसी इंडिविजुअल के कुछ कहने से वो कर लें. हाँ, सो पढ़ने के लिए बहुत सारे अलग-अलग वो चाहिए. हो जाए तुम्हारा एग्ज़ाम तो आई सजेस्ट यू सम बुक्स. आई आल्सो हैव सम पीडीएफ जो उनके साथ वालों के इंटरव्यूज़ और उनके साथ वालों के जो संस्मरण मेमोरीज़ होते हैं उनके बारे में लिखी गई हैं. तो आई विल शेयर दिस, तब तुम पढ़ लेना. ठीक है? गुमनामी. बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज़ हैं बच्चे. बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं. बट वी डोंट डील विद द कॉन्स्पिरेसी. ओके? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, यहाँ पे जो पर्टिकुलर एडिटोरियल्स हैं आज के, बहुत 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 वो हैं, जरूरी एडिटोरियल्स हैं. डीलिमिटेशन आफ्टर 2027, रिवॉर्डिंग पावर इन इंडिया. जो एस वाई कुरैशी हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे इंडिया के, एंड ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, मेक श्योर कि इसको पढ़ना जरूर. फिर उन्होंने माइंडलेस किलिंग जो मणिपुर में हुआ है उसको माइंडलेस किलिंग बनाया एडिटोरियल. Right to dignity. Government must ensure equitable pay for आशा वर्कर्स. इंडिया ईयू की पार्टनरशिप दुनिया बात कर रही है. ट्रायल पर सोशल मीडिया, भाई ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग आर्टिकल था. जिस तरीके से चीजें हुई हैं. एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, लाइक अलेजिंग अ मैन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट इन अ बस. वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो उसके बाद ही कमिटेड सुसाइड. Yes. So for now, every individual is talking about the trial by social media. There are several cases in which men are doing wrong thing in the buses and crowded places against the women, but not all of them are doing intentionally or all of those things are happening intentionally. There are certain cases by mistake, there are certain cases which are represented with the wrong angles, but nobody talks about it. But the way things happened, it was very, very, very bad. So, one thing that you should follow in your life, do not get influenced with the social media and let the judiciary and administration work against it. And make sure कि इसको पढ़ना, it's a very, very critical article. मुझे लगता है सभी को पढ़ना चाहिए. राइट. ठीक है, हम बुक्स का डिस्कशन क्लास में करते हैं कि कौन कौन सा है. इफ आई गेट अ चांस आई विल शेयर द पीडीएफ. भाई सोशल मीडिया ट्रायल्स जो हैं ये बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं. And that is something we should actually stop. मतलब this is not at all welcoming. Adani shares stands after SEC seeks bypass to India on summons. So जो भी वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका की, जब उन्होंने बाईपास करने की कोशिश करी इंडियन अथॉरिटीज को इन समन दी अडानी डायरेक्टली, तो उनके अडानी ग्रीन के शेयर्स जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं. तो ये एक न्यूज है. तो भाई सोशल मीडिया में जो है, प्लीज उसे सच मानो ही मत. दैट इज बेटर. Vietnam's To Lam unanimously re-elected as the party chief for 5 years, right? And जो वो है Takaishi, जो जापानीज Takaishi है प्राइम मिनिस्टर, Sanei Takaishi, she dissolved the lower house and setting up the process for the early election. Russia demands Donbas region before talk, right? उनका ये कहना है कि पहले डॉनबस दे दो.
दक्ष, इकोनॉमिक्स पेज को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक जो तरीका होता है उस पर बात कर लेते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट सम इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन लाइक कोई आईएमएफ की न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक की है, आरबीआई की है, कोई यूएन रिलेटेड एजेंसी है, उसकी कोई सर्वे रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अभी वो वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आया था, है ना? तो ऐसी जो पर्टिकुलर न्यूज़ हैं, उनको आप पढ़ लो और बेसिक फैक्ट्स को कर लो। इकोनॉमिक न्यूज़ के लिए बहुत सारा बिजनेस एंड बाकी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और हमेशा यही पर्टिकुलर जो वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, उनकी न्यूज़ ही इन जनरल फ्लैट में पूछते हैं, उनसे रिलेवेंट ही रिपोर्ट से बाकी सब। तो वो मिले पढ़ो, नहीं मिले तो देखते जाओ मजे लो। इंडिया यू दैट साउंड्स लाइक ईयू, लाइक ओके, इंडिया ईयू will upgrade ties trade deal still in the works. So जो भी upgrades हैं, जो दूसरी चीजें हैं, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है. The trade agreement will be announced in the next week during the India EU summit in Delhi. A new defense security partnership and deal for information security and others are also in agenda. इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी. So we're not going to do it again. बैक टू द रशिया यूक्रेन, दे वांट कि अगर आपको टॉक स्टार्ट करनी है तो जो डॉनबस रीजन है उसको छोड़ दो एंड फिर अपन बात करते हैं। यूके हिट बैक आफ्टर ट्रम्प कमेंट ऑन नेटो। जिस तरीके से जो कमेंट हुआ था, वो क्या बोला था उसने, ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल में, a great ally like UK is doing wrong and this is going to be foolish something something। तो यूके प्राइम मिनिस्टर जो केट स्टैमर है, उनका सीधा कहना था कि भैया this insulting claims by Donald Trump they are not at all welcoming। हमने फ्रंट लाइन में लड़ाइयाँ की हैं एंड दैट इज नॉट सपोज टू हैपन। ठीक है। और व्हाई पीपल आर एक्चुअली लिसनिंग हिम। म्यांमार मिलिट्री स्ट्राइक्स विलेज किल 21 रिबल ग्रुप। यस, जो म्यांमार की मिलिट्री है उन्होंने एक विलेज में स्ट्राइक करके 21 लोगों को मार दिया, ऐसा रेबल ग्रुप का कहना है। अवामी लीग टू कंटेस्ट इलेक्शन सेज हसीना। The Sheikh Hasina, the deported and like living in India, former Prime Minister of Bangladesh, right? She demanded that Awami League, जो है जिसको अभी इलेक्शन से वो कर दिया गया है, डिस्क्रेडिट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, द इलेक्शन, सॉरी, अवामी लीग शुड बी पार्ट ऑफ इलेक्शन, ऐसा डिमांड किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश से। तो जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, उनसे भी इस चीज की डिमांड रखी गई है कि देयर शुड बी a strong opposition so that they can have a functioning government, functioning democracy, राइट? तो चल रहा है कि जिस तरीके से चल रही है बांग्लादेश में, दैट इज गोइंग टू बी द fearful election। हाँ, मादुरो के बारे में अभी न्यूज नहीं आएगी। हाँ, अभी वो वेनेजुएला वाला न्यूज जरूर आया था, रुक जाओ मैं बताता हूँ। दैट इज दिस कि वेनेजुएला मूव्स टू ओपन ऑयल सेक्टर टू यूएस कंपनीज, अ की फिल्म डिमांड। So Venezuela's lawmakers are taking certain initial, what we can say, steps to go through some uh, new changes in the system and law so that the American companies can take entry in the Venezuelan oil sector. Right. तो ये एक चीज है। एंड मादुरो, वेयर अबाउट्स ऑफ मादुरो एंड समथिंग लाइक दिस अभी भी मिसिंग है। दे स्टिल इन द जेल एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द ट्रायल। एंड भैया, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, इट वाज अ फाइन मैच। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हाईलाइट देख लो, और अगर आप पूरा मैच देखते हो तो बंद करके वापस हाईलाइट देखना शुरू कर दो। सो दिस वाज द न्यूज़, राइट? लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्वेश्चन आंसर। रेडी फेलास? आज थोड़ा मेरे को ज्यादा टाइम मिला क्वेश्चन आंसर वो करने के लिए, कि न्यूज़ बहुत ज्यादा वो नहीं थे। ओके, चलो, वन बाय वन। The first question: the Supreme Court recently sought status on the reports from the CBI and ED in connection of alleged bank fraud involving which corporate group? राइट, किस कॉरपोरेट ग्रुप से रेलेवेंट बैंक फ्रॉड की रिपोर्ट सीबीआई और ईडी से मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने? ऑप्शन सर: अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, रिलायंस रिटेल।
Okay, the correct answer is C. Very good. The Anil Dhirubhai Ambani Group. Genius, guys, proud of you. Moving on to the next question. Under which article uh, of Indian Constitution the governor mandate to address the state legislature at the beginning of the first session every year? This भारतीय संविधान के किस आर्टिकल या अनुच्छेद के द्वारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट असेंबलीज हैं, विधानसभाएं हैं, उनके पहले सेशन में, साल के पहले सेशन में गवर्नर को एड्रेस मैंडेटरी होता है? ऑप्शंस आर अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 176 और अनुच्छेद 200। माय हिंदी इज गुड, यू नो। ना, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गाइस। यस, मैंने बोला भी था कि आर्टिकल 176(1) के अंडर ये मैंडेटरी होता है कि वो पूरा का पूरा स्पीच पढ़े। एंड तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में दे आर वॉकिंग आउट फ्रॉम द स्पीच। दैट इज 160 या 76। ध्यान रखना ये चीज। मूविंग ऑन, the discretionary power of a governor were elaborately discussed by the Supreme Court in which landmark 2016 judgment? यस, 2016 के जजमेंट में गवर्नर्स के पावर का, है ना, एक इलेबोरेटरी डिस्कशन हुआ था बाय सुप्रीम कोर्ट। तो 2016 का वो लैंडमार्क जजमेंट कौन सा था? ऑप्शंस आर एस आर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नाबम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशव नंदावती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। थर्ड का डी, थर्ड का सी। द करेक्ट आंसर इज नाबम राबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर। बच्चों, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का जजमेंट है, बहुत पुराना है। 2016 के जजमेंट की बात हो रही है, दैट इज नाबम राबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर। दिस इज योर होमवर्क कि इस पर्टिकुलर केस को, इस जजमेंट को एक बार प्रॉपरली पूरा पढ़ें। ठीक है? हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर फेमस केस जो है ना वो आपके लिए जरूरी नहीं कि वही हर क्वेश्चन का आंसर बने। द करेक्ट आंसर इज बी, नाबम राबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर। जो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है वो पुराना 74 का केस है। नेक्स्ट, right? Which agency has been entrusted with the investigation of the killing of a Meitei man in Manipur? CBI, State Crime Branch, NIA, SIT? बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन रखा हुआ है, जल्दी बताओ। वेरी करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हमने बात की है कि जो गवर्नर है मणिपुर के, उन्होंने रिसेंटली ये पूरा का पूरा केस जो है वो NIA को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, चले। नेक्स्ट, the Lokpal granted additional time by which court to decide the sanction on MP Mahua Moitra? महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट जो सैंक्शंस लगने वाले हैं उसके लिए लोकपाल को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, एडिशनल टाइम दिया गया है। किस हाई कोर्ट या किस कोर्ट के थ्रू? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दी कैलकाटा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, स्पेशल CBI कोर्ट? बताओ। मैंने अभी अभी बताया कि महुआ मोइत्रा केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को 2 महीने का और टाइम दिया है कि भैया आप जो उनके चार्जेस और सैंक्शंस हैं वो प्रेजेंट करो। राइट? नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट वाज दिल्ली हाई कोर्ट। ढंग से न्यूज पढ़ो, ढंग से वीडियो सुना करो। तुम लोग सुबह चाय कॉफी पीने के बाद 8 बजे बैठो मेरे साथ। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वन, इंडिया हैज साइंड एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विथ हाउ मेनी कंट्रीज एज परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट डेटा? गवर्नमेंट के हिसाब से कितने देशों के साथ, कितने परसेंट देशों के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है इंडिया ने? 35, 42, 48, 56? बताओ। बताओ, भावेक, दक्ष, ऋषपर्णा? द करेक्ट आंसर इज 48%। यस,
48% जो है दैट इज द कंट्रीज जिसके साथ हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, 48 कंट्रीज के साथ। ठीक है, नॉट एवरी कंट्री बट 48। चलो नेक्स्ट, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट इज बीइंग अपोज्ड प्राइमरली बिकॉज इट, है ना, जो वीबी राम जी हैं, दैट इज विकसित भारत ग्रामीण फॉर गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, ये अपोज किया जा रहा है प्राइमरली किस लिए? राइट, रिड्यूस्ड मिनिमम वेजेस के लिए, डाइल्यूट्स पावर ऑफ ग्राम पंचायत, abolish मनरेगा, ट्रांसफर फंडिंग टू प्राइवेट एजेंसीज। क्योंकि रिस्पॉन्ड कहना सी दैट इज अबॉलिशिंग मनरेगा, दक्ष का भी कहना है सी। रिमेंबर वी हैड दिस डिस्कशन इन दिसंबर, आई गेस जनवरी में भी नहीं, जब बीवी राम जी वो हुआ था, पास हुआ था, जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट है। तो मैंने बताया था कि जो पंचायत के पावर हैं उनको कम किया गया है। जो लोकल अथॉरिटीज और लोकल बॉडीज हैं वो इससे खुश नहीं है। यस, अबॉलिशन मनरेगा से द पीपल हु आर नॉट वेरी हैप्पी इज अपोजिशन, बिकॉज वहां से गांधी जी का नाम हटाया गया है। द अपोजिशन इज नॉट हैप्पी बिकॉज स्टेट और सेंट्रल के बीच में पहले इस कंप्लीटली सेंट्रल फंडेड स्कीम थी, नाउ द स्टेट इज आल्सो सपोज टू कंट्रीब्यूट, तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी। मिनिमम वेजेस का रिडक्शन नहीं हुआ है, ट्रांसफर फंडिंग टू प्राइवेट एजेंसीज नहीं हुआ है, बट दे एक्चुअली रिड्यूस द पावर ऑफ, डाइल्यूट द पावर ऑफ ग्राम पंचायत। राइट, जैसे पहले पंचायत के पास मनरेगा के अंडर काफी पावर होती थी। इफ यू हैव सीन पंचायत, तो मैं फर्स्ट पर्टिकुलर सीजन में ही ये बात पता चल जाएगी, पंचायत एक्चुअली गवर्न द रूरल मनरेगा। बट अभी के टाइम पे उनके पावर डाइल्यूट हुए हैं। मूविंग ऑन, which constitutional provision empowers governor to send a report recommending president rule in the state? So कौन सा आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower करता है गवर्नर को to send a report recommending the president rule in the state? Options are 352, article 356, article 360, 365. Easy question, जल्दी आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड ऋषपर्णा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड भाविक। दक्ष, किधर गोइंग? The correct answer is B, Article 356। इजी है, गवर्नर रूल, सॉरी, जो वो है प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है मणिपुर में। सो मैंने सोचा ये भी तुम्हारा स्टैटिक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ओके, which Indian regulatory accused PwC and EY executives for insider trading related to the Yes Bank share sale? इस क्वेश्चन का आंसर जीके से ज्यादा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का है। सो बताओ किसने पीडब्ल्यूसी ईवाई एग्जीक्यूटिव को रेगुलेटरी अक्यूज के लिए, सॉरी, रेगुलेटरी इनसाइडर सेल के लिए वो किया हुआ है, अक्यूज किया हुआ है फॉर द यस बैंक? आरबीआई, सीबी, एमसीए और एसएफआईओ। वेरी गुड दक्ष, ऋषपर्णा, वेरी गुड भाविक। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भैया जहाँ पे भी शेयर मार्केट, जहाँ पे भी ट्रेडिंग की बात होती है वहां पे आ जाता है कौन? सेबी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। ओके, एल्गार परिषद केस इज एसोसिएटेड विद alleged link to which of the banned organization? सो एल्गार परिषद केस किस बैंड ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? सिमी, दैट इज स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, अल कायदा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, आईएसआईएस। बताओ मित्रों। इजी है क्या? यस, वेरी करेक्ट। द आंसर इज सी, दैट इज सीपीआई, माओइस्ट। वेरी गुड गाइस। चले नेक्स्ट, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ highlighted the नेताजी सुभाष चंद्र बोस emphasizing on which concept similar to today's आत्मनिर्भरता? सो जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस एम्फेसिस, किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज किया
जो आज के टाइम पे आत्मनिर्भरता के बारे में बात करनी चाहिए करते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडिजिनस आर्म प्रोडक्शन, डिफेंस प्राइवेटाइजेशन और मिलिट्री अलायंस। रिश्वना गॉट द आंसर लाइक मैं तो तैयार बैठी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी करेक्ट आंसर, इंडिजिनस आर्म प्रोडक्शन। यस, ध्यान दो, मतलब हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब नेताजी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। एंड अगर किसी को पता हो कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश रूल करे उनके अगेंस्ट आर्मी, तो वो तो बंदूक देंगे नहीं। तो जो इंडिजिनस आर्म प्रोडक्शन है उनके लिए काफी ज्यादा एडवोकेट थे हमारे नेताजी। Okay, moving on to the next one. Russia's key precondition for the talk with Ukraine includes withdrawal from which reason? So Russia किस जगह से यूक्रेन का withdrawal चाहता है before the peace talks? Options are Crimea, Luhansk, Donbass और Kiev. अभी अभी डिस्कस किया तो मेरे को नहीं लगता तुम भूल गए होगे। शाबाश मित्रों, genius. That is Donbass. We had discussed this. The dispute of Bhosala complex in Madhya Pradesh is associated with two religious identities. कौन सी दो रिलीजियस आइडेंटिटीज आपको मध्य प्रदेश के भोसला डिस्प्यूट से एसोसिएटेड मिलते हैं? इंटरनेट अच्छा है उसका, एंड शी हैज गुड रीडिंग स्पीड। यस। हिंदू टेम्पल, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, मॉस्क एंड चर्च, टेम्पल एंड मॉस्क, गुरुद्वारा एंड मॉस्क। बताओ। ये तो इजी है यार। है। द करेक्ट आंसर इज टेम्पल एंड मॉस्क। मैंने अभी अभी बताया तुम्हें कि देर इज अ टेम्पल ऑफ सरस्वती माता, दैट इज वागदेवी टेम्पल, देन देर इज अ मॉस्क। सो द वागदेवी टेम्पल इज 11th century, आई गेस, व्हाट वी कैन से मॉन्यूमेंट। हाँ, तो अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करूं तो एएसआई का जो सर्वे था उसने यही बात की थी कि दिस इज अ 11th century monument built by the Raja Bhoj himself. Right? Yes. And then after 200 years, there is a particular mosque that was created. And तब से ये लड़ाई झगड़े चालू हैं। टाइम शेयरिंग जो है वो भी क्रिटिकल होता है। द थिंग इज कि जब भी फ्राइडे, बसंत पंचमी ये होता है तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। ठीक है, तो दिस जस्ट वांट कि इस तरीके का स्ट्रक्चर रहे कि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करे। गेटिंग? चले, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Supreme Court in Shamsher Singh versus State of Punjab held that governors act primarily on whose aid and advice. So Supreme Court ने शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में किस पर्टिकुलर चीज के लिए उन्होंने वो किया, क्या कहते हैं, गवर्नर को एक्ट करने के लिए बोला गया, किसकी एड एंड एडवाइस में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इलेक्शन कमिश्नर। बताओ। है। गधों, मैंने अभी बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर किसके एड एंड एडवाइस पे काम करेगा? द आंसर इज स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो सजेस्ट करेगा, प्रेसिडेंट रूल के बारे में रिपोर्ट देगा। चीफ जस्टिस का कोई लेने देना नहीं, इलेक्शन कमीशन कोई लेने देना नहीं है। बट इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो उसे एडवाइस करेंगे ना। है या ना? ठीक है, चलो। Next, the Election Commission of India's special intensive revision of electoral become controversial primarily due to the concern. Right? जो SIR है वो किस रीजन से कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्या कंसर्न रहे हैं? ऑप्शंस आर वोटर टर्नआउट रिडक्शन, मेंटल स्ट्रेस इन सोसाइटी, यूज ऑफ ईवीएम, डिलिमिटेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बताओ।
कम ऑन fellas, ये तो इजी है। वोटर टर्नआउट रिडक्शन ये इलेक्शन में होगा, है ना रेशपर्णा, दक्ष, दैट इज गोइंग टू बी इन इलेक्शन। बट मेंटल स्ट्रेस एंड सुसाइड जो पीएलओज इन अदर चले, इसके लिए कंट्रोवर्शियल हुआ है। वोटर टर्नआउट इलेक्शन में होगा, वो कम होगा ज्यादा होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी के टाइम पे क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस एंड सुसाइड से रेलिवेंट है, रिलेटेड है। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, राइट? आई होप यू गाइस एंजॉय, है ना? एंड आई होप यू टुक लाइक गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। और मेक श्योर करो भाई कि वीडियो लाइक वाइक करना स्टार्ट करो, है ना? ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आएगी तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर में लड़ाई झगड़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करने में मजा आएगा, राइट? सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। मजे करें एंड लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। ओके, सो भाभी का कहना है, सर विल यू बी कंडक्टिंग द न्यूज़पेपर सेशन ऑन 26 Jan? यार इट्स अ नेशनल हॉलीडे, राइट? एंड जो अपन टाइम है ना, जिस टाइम पे करते हैं उस टाइम पे तो ये स्पीच वगैरह चालू ही होंगे। सो विल सी, अगर ऐसा हुआ कि 26 को नहीं कर पाए, आई विल कवर द टॉपिक्स फ्रॉम 26 ऑन 27, क्योंकि 27 को मोस्ट प्रोबब्ली न्यूज़पेपर नहीं आएगा, नेशनल हॉलीडे है इसलिए, राइट? Mental stress, how the primary reason for the marginalized group reduction? ना, दिस इज अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ एन एसआईआर का जो पर्टिकुलर कंट्रोवर्शियल हो रहा है वो है। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। मजे करें, लाइफ में मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, और जल्दी मिलते हैं। गुड डे गाइस।